चलो भाई, तो शुरू करते हैं। वेलकम 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 टू yet एपिसोड ऑफ द अनकैप्ड इंडियंस एंड व्हाट अ मैच। व्हाट अ मैच, मजा आ गया। एक टाइम पे जब से दो विकेट गिरी थी और अजिंक्य रहाणे और अंग्रेज रघुवंशी बैटिंग कर रहे थे, मोस्टली लोगों ने टीवी ऑफ कर दिया था। मैंने बाई चांस सिर्फ स्कोर चेक करने के लिए वापस खोला, एंड जस्ट जैसे ही मैंने खोला, अजिंक्य रहाणे की विकेट गिर गई। नाउ जब अजिंक्य रहाणे की विकेट गिरी, तब काफी डिस्कशन हुआ कि रिव्यू लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। फिर मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि आज शायद युजवेंद्र चहल का दिन हो सकता है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मेरे को लगा युजवेंद्र चहल का दिन इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे हवा में ड्रिफ्ट मिल रही थी, और उसे पिच से थोड़ी बहुत असिस्टेंस मिल रही थी। और जहां पे थोड़ी सी असिस्टेंस मिलती है युजवेंद्र चहल को, वो अपनी लाइन एंड लेंथ को इस तरह वेरी करते हैं जैसे कोई नहीं कर सकता। मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत युजी चहल से ही करना चाहता हूं, बिकॉज उनके जो फास्ट बॉलिंग कोच है जेम्स होप, उन्होंने ये बोला कि 5 इनिंग्स खेल चुके हैं युजवेंद्र चहल, सिर्फ 2 विकेट निकाली है। एंड हम सब चाहते हैं कि वो और जल्दी गेम में आए। इस बार वो आई थिंक 7वीं ओवर में आए थे, और उसके बाद जो युजवेंद्र चहल ने किया है, इट इट इज समथिंग। युजवेंद्र चहल की बॉलिंग अगर आप देखो ना, तो उसके पास रशीद खान जैसा क्विक काम नहीं है, या नूर अहमद की तरह 100 105 में नहीं डाल सकता। He has very three simple classical leg spinners variations. He has a googly, he has a very good stock delivery in his leg break, and he has an excellent flipper. ये इसी इसी स्किल सेट के साथ ना, वो अपनी लाइन एंड लेंथ को ऐसे ऑल्टर करते हैं जैसे कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस बंदे का जो दिमाग है ना, ये आज सच में काम में है। अगर आपने देखा हो तो, आप लेफ्टी हो या राइटी हो, स्टक फ्रॉम ओवर द विकेट, कि वो वहीं से डालेगा। ही चेंज हिज लाइन ब्यूटिफुली, शिफ्टिंग बिटवीन लेग एंड ऑफ। ठीक है। हल्का सा वो बॉल को हवा में ड्रिफ्ट कर रहा था राइट हैंडर को अंदर की तरफ, और वो बॉल घूम के बाहर जा रही थी। और लेफ्ट हैंडर रिंकू सिंह को हवा में वो दूर ड्रिफ्ट कर रहा है, लेकिन बॉल अंदर आ गई। दिस इज टेक्स्ट बुक स्टाइल ओल्ड स्कूल लेग स्पिन बॉलिंग, जिसको बोलते हैं ना शेन वॉन जो करता था। मतलब आजकल के T20 में तो ऐसा हो गया है कि आपके पास 10 वेरिएशन होते हैं, आप बॉल छुपाते हो, अब ये करते हो, वो करते हो। लेकिन युजवेंद्र चहल का जो ताकत है, वो उसकी स्लोनेस में है, वो उसकी फ्लाइट में है। वो किस तरह से बॉल को लूप देते हैं और हमेशा आगे डालने की कोशिश करते हैं। अगर आपने आज रसल के जब वो बॉलिंग कर रहे थे, उन्हें मार पड़ी, पर अगर फील्ड प्लेसमेंट देखा, सारे सामने थे, सारे के सारे फील्डर सामने थे। एक तो इतना सामने था कि मुझे लगा साइड स्क्रीन के बीच में आ रहा होगा। or he had the guts to actually get out and bowl those fuller deliveries, asking Russell की तरह में दम है ना तू मार। रसल ने मारा, ऐसा नहीं है, बट इट टुक अ लॉट ऑफ गट्स। सो हैप्पी फॉर युजवेंद्र चहल, 5 मैचेस नो विकेट्स। रिकी पॉन्टिंग ने उसे मैच से पहले पूछा था कि आप एक फिटनेस टेस्ट दे दो, क्योंकि आप खेल पाओगे कि नहीं मुझे पता नहीं है। Chahal gave the fitness test and he said, I'm ready. Imagine if Chahal was not playing this game. That would have been something completely different. Glenn Maxwell getting Venkatesh Iyer was a crucial breakthrough. But all in all, Punjab has chased the highest score against KKR in 2024. Now they've defended the lowest total in 2025. KKR versus Punjab is the new rivalry. इसका नाम कुछ एल कुछ तो रख दो, जो आपका मन करे वो इस rivalry का नाम रख देना। uh, Talking about both sides batting, I think very poor shot selection, very poor game awareness, and at one point in time, it was not that the wicket was bad, because you could see batsmen hitting fours and sixes quite easily. What really bothered me is what the shot selection by both these matches, by both these teams. इनफैक्ट अजिंक्य रहाणे तक तो ये बोल दिया कि स्लॉग स्वीप करना या स्वीप करना बहुत डिफिकल्ट था इस विकेट पे। पर आप देख लो, वेंकटेश अय्यर ट्राई टू स्वीप, अजिंक्य रहाणे ट्राई टू स्वीप, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे सॉर्ट ऑफ पेड द प्राइस फॉर इट ऑल्सो। एक ट्रिक जहां पे केकेआर शायद मिस कर दिया इस बार, वो ये था कि केकेआर ने इस बार मोइन अली को बिठा दिया और वो एंड्रेड नोकिया को ले आए। Probably because they felt Mulanpur has a little bit of grass, the conditions are a little cold, maybe it helps fast bowling a lot more. Now imagine if they had played Moin Ali, then they would have so many spinners at their disposal who are actually very lethal. But they did not need so many spinners, but they could not chase down 112. That is something KKR has managed to pull off. अजिंक्य रहाणे in the post match presentation, उसके पास कोई words नहीं थे कि भाई वो बोले तो क्या बोले, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वैसा हो गया था। इनिशियली व्हाट आई थॉट वाज, हर्षित राणा की जो बॉलिंग थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। आई थिंक फील्ड प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी थी, एंड क्रेडिट गोज टू रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इंडिया हैज राइट नाउ। उसका इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान ए का जब कैच देखा हो, दैट वाज आउटरेजियस। ठीक है, आज भी जो उसने, अब आपके बेस्ट फील्डर्स हमेशा वहां रहेंगे जहां पे कैचेस के सबसे ज्यादा चांस है।
हर्षित राणा ने एक डीप स्क्वायर लेग रखा, जो हमने बहुत सारे मैचेस में देखा है, बैट्समैन को जानबूझ के पैर की तरफ बॉलिंग करते हैं, सो दैट दे कम इन एंड स्टार्ट प्लेइंग दो शॉट्स कि भाई आपको सिक्स मार रहे हैं, आप सिक्स मारो, बट वहां पे ही मारना पड़ेगा जहां पे फील्डर है. हर्षित राणा मेड श्योर प्रियांश आर्य डज इट एंड गॉट हिज विकेट. डिसेप्टेबल स्लोअर वंस. हर्षित राणा की एबिलिटी जो है कम बैक करने की आफ्टर गेटिंग अ फोर और सिक्स इज वेरी 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 गुड एंड वेरी कमेंडेबल. Shreyas Iyer gets out on a very bad delivery again caught by Ramandeep Singh. जॉश इंग्लिश के साथ जब हर्षित राणा बॉलिंग करना है तो अगर आपने देखा हो तो बाउंस थोड़ा सा स्टीप था. ही वाज बॉलिंग गुड लेंथ डिलीवरीज बीटिंग देम ट्राइंग टू कट. English was not very very careful. After that came Maxwell, who is a matter of concern because in last like say, 6 innings, he's been 7 innings, he's been dismissed 4 times by Varun Chakravarti, which clearly shows कि Maxwell वरुण चक्रवर्ती को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं. 6 ओवर के बाद 54 for 4 थी. मैक्सवेल और वधेरा दोनों खेल रहे थे, बट आई थिंक दे रन आउट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एक इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश की जगह दे ट्राई कीपिंग द मोमेंटम अप, ट्राइंग टू पुट द प्रेशर ऑन, बट इट्स केकेआर, सो इट्स डिफिकल्ट टू पुट दैट प्रेशर ऑन. सुया शेडगे who's been fantastic for Mumbai in the Syed Mustaq Ali Trophy, मेरे को बहुत ज्यादा होप थी. He got out to a very loose shot, to be honest. Again, an example saying that shot selection is something that really really bothers them. Um, but what a match, guys! What a match! Like what a turnaround by Punjab Kings. Uh, El Trinity, yes, you can call that. I genuinely don't know what KKR has to say and what they will think about this, but what they really need to think about is the fact that they were in the game. It was their match. There was no way they could have lost it. Ramandeep Singh gets out on a full toss out of everyone. Something that is never. I mean, कैसे हो गया यार ये. मुलानपुर के बाकी के पहले दो स्कोर्स 200 प्लस जा रहे थे. टीम्स वर नाउ फेसिंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन डू, बट दिस वाज अ थ्रिलर ऑफ अ मैच. मतलब मेरे को एंड तक लगा कि शायद रसल जिस तरह से युजवेंद्र चहल की ओवर को डोमिनेट किया कर जाएगा, बट kudos to Marco Jansen of bowling that delivery. एंड उससे पहले वाली ओवर जो इसने डाली अर्शदीप सिंह ने, वेरी गॉड वैभव और आउट. क्लासिक प्रॉपर टेस्ट मैच लेंस था. मतलब ऐसा लग रहा था कि एशेज इन कलर देख रहे हो आप. What a match! What a match! I think KKR now has a lot of thinking to do because KKR बहुत ज्यादा छोटी छोटी मार्जिन से मैच आ रहे हैं. 1 or 2 hits away, a few runs away, and that is what KKR is facing. And मैंने कल भी ये बोला था, KKR's opening partnership of Sunil Narine and Quinton de Kock together is not working out how it worked out last time. Sunil Narine is trying to hit every odd ball out of the park, which is very, very difficult, especially when you have quality bowlers like Jansen, Arshdeep, etc. bowling at you. So that is something that they really need to figure out on if Narine can become successful a little bit more often. Quinton de Kock, after that one knock, has not really fired. He keeps chipping it in the air, does not get the timing, ball hits high off the bat, सीधा कैच देते हैं square leg mid wicket की तरफ. It's not the first time Quinton de Kock इस तरह से out हो रहे हैं. Angrish Raghuvanshi, again the batter from Mumbai, very very impressive, very good shots. But यहाँ पे युजवेंद्र चहल का आप दिमाग देखो, उसने उस विकेट से पहले एक बॉल डाली लेग स्टंप की तरफ, एंड देन सॉर्ट ऑफ ही रियलाइज रघुवंशी यार ये मेरी स्टंप्स को अटैक कर रहा है, लेग तरफ की तरफ फील्ड है, मैं ऑफ की तरफ मारने की कोशिश करता हूँ. एंड अ क्लासिक डिलीवरी वेयर द बॉल इज एंगलिंग टुवर्ड्स द राइट हैंडर बट मूव्स अवे, ट्राइज टू गिव स्पेस, कॉट एट पॉइंट. कितनी बार हमने देखा है युजवेंद्र चहल को ये करते हुए. युजवेंद्र चहल against leg spinners. A leg spinner against left arm batsman is one of the worst matchups because the ball sort of comes into you. But Chahal, again using his brain, again that line, length, deviation in the air, drift in the air, and Chahal ने खत्म कर दिया उनको यार. Like in that 1-2 over, he just got all of them. Uh, that's sort of the match summary out of all. I think Shreyas Iyer के बारे में हमने कल बोला था कि he's one captain who's not able to defend 200 plus totals twice in the IPL, and now he's defended 112. So how do you make up for Shreyas Iyer saying boy he's a good captain or he's a bad captain? Uh, Please guys keep commenting. I'm alone, so you'll have to keep commenting. तो ये बात हो पाएगी, वरना मैं अकेले कितना ही बात करूंगा, because I will need a few contradictory opinions or something that you feel is not right with KKR. It is quite heartbreaking for KKR fans, to be honest, because इस तरह से अगर आप मैच हार रहे हो, आपकी इतनी अच्छी बॉलिंग 111 रन 95 ऑल आउट is absolutely hilarious. But what a match! What a match, guys! मजा आ गया. Uh, Ricky Ponting, I think the sort of enthusiasm that he has created in the team, the sort of Ricky Ponting ने मुझे याद है पहले भी ये बोला था कि अगर हम
अगर हम पूरी टीम को चेंज करें, अगर आप मुझे 4 साल दे सको तो मैं पहले पहले ईयर में आपको शायद ट्रॉफी ना जिता पाऊं, बट मैं एक नई टीम खड़ी कर सकता हूं। मैं उसको हमेशा हमेशा एक ऑस्ट्रेलियन मतलब नेवर गिव अप माइंडसेट के साथ लेके जा सकता हूं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड. For KKR's bowling, I think kudos to Vaibhav Arora. I think the first over that he bowled was really good in swingers, but then sort of Priyansh Arya and Prabhsimran Singh knew what he was trying to do, so they stepped out a lot. Andrek Nokia was a surprising decision at the pace which he bowls, but he was sort of getting some assistance and bite from the wicket, so that was really very good to see. Varun Chakravarti, Sunil Narayan doing things that they can, stopping runs, bowling stump to stump, bowling the variations, asking the batsman to hit where the field was. So I think that was excellent from KKR. It's not something new that we are seeing it, but yeah, it was quite fascinating to see what KKR as a bowling unit did. KKR's fielding was also very good, which normally isn't the case in most of these IPL. Ramandeep Singh, as I told you, Ramandeep Singh desi ghee खा के अपने athleticism बढ़ाता है, so it was great to see that. Harshit Rana is again a favorite of mine since that Klassen wicket that he took last year against KKR. So that's something very nice. Anything else that you guys felt during the match was something which was stark or noticeable, saying, "यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया?" Um, Defense is crucial. Better nowadays. Just want to hit boundaries. If only one batsman batted like this, like it's a test match. Parth bhai, इसमें ना defense is crucial. I totally agree with it because that is where your shots sort of play in. But मेरे को ये लगता है कि आपको ये वाला जो इंटेंट है ना बाउंड्री स्कोरिंग का, इस इंटेंट के पीछे भी थोड़ा बहुत लॉजिक सब लोग अप्लाई करते हैं कि कौन से बॉलर को टारगेट करना है, कब कौन से बॉलर को मारना है, और आप कौन सी सिचुएशन में वो भी देखो. आज केकेआर के पास कोई जरूरत नहीं थी. सिर्फ वनडे वाली इनिंग्स भी खेलते ना, मैं तो बोलता हूँ टेस्ट भी नहीं, अगर वनडे वाली इनिंग्स भी खेलते हैं ऑड बाउंड्री इन 1 or 2 overs, दे कुड हैव इजीली चेस दिस डाउन. uh, I feel Naren should not open the batting if he gets out cheaply. The whole batting lineup is under pressure. Also, players like Rinku, Ramandeep don't get enough ball. So Rinku and Ramandeep are the sort of players who have practiced a lot and designed themselves to play innings like these, where they get less balls and create more impact. Unfortunately, they are not able to do that. El Chokiko. I don't agree, Rishabh. Naren is just hit and miss. It's risk that KKR is taking and it pays off. So ये गंभीर ने बोला था about सुनील नारायण कि आपके पास 14 मैचेस हैं, आप 14 में से 6 मैच में भी इम्पैक्ट कर दोगे तो 6 मैच हम जीत जाएंगे, क्योंकि आपका इम्पैक्ट बॉल और बैट से बहुत ज्यादा होगा. बट दिस टाइम इट्स गेटिंग अ बिट टू मच वेयर दे हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 7 मैचेस. They are wasting the batting potential of Raghuvanshi Iyer by playing them in the middle order. They have done well in the top order. Raghuvanshi, I agree, but Rahane has to come at number 3. Gurbaz could be a genuine replacement. Praise KKR bowling हो गया. KKR should drop QDK and add, like, yeah, I don't know. Tough choice, but yeah, Gurbaz is someone I would like in the 11 because he would start going. But QDK also has that. It's just that it's not working out for him. Maxwell doing good with the ball is enough to justify his place. I think Maxwell. One of the reasons why people back Maxwell a lot is because on his day he can really turn the game. He's very handy with the ball, very sharp in the field. The experience that counts for. But again, Maxwell has to really improve his batting against spinners. पहले युजवेंद्र चहल उन्हें इतनी बार आउट करते थे, अब वरुण चक्रवर्ती has just got into his nerves. Please do bowling analysis of Rana. He always picks wicket out of nowhere. Okay, so I'll tell you about Harshit Rana. Harshit Rana, as everyone knows, is a hit the deck bowler. Bowls around 140, 150. Lekin Harshit Rana is not afraid of bowling a fast off spinner in the start of the over. मतलब अगर वो चौथी ओवर भी डाल रहा था तो उसने उसको छक्का पड़ा. But he has this unique ability of bowling slower ones, which are very deceptive, especially with no changes in action. Suddenly the ball is coming at 115, 115, 120, and suddenly he comes up with a 140 bouncer. He's done that before. So that variation that Rana brings, that unpredictability about Harshit Rana is absolutely fantastic. I think he's a very thinking cricketer. He does not come off as a thinking cricketer, but he's a very smart bowler. That's one of the biggest reasons why Harshit Rana is so successful. Last match, Iyer was busy to reading Abhishek's note. Today's match, Iyer was busy at singing the check for Chahal's alimony. Rahane blamed himself. Was he really responsible? Is this the second time happening? He gave 200 runs. Rahane, as a cricketer and as a captain, has always been someone who leads from the front. He does not believe a lot in blame game. Leads Mumbai, led India to the BGT trophy also. Now is leading KKR. Very experienced.
So I think the only reason why he blames himself is because he was in form. He should have gone for the review, backed himself, and finished the match for KKR, which he would have if he wouldn't have gone out. And that is when the match actually shifted in Punjab's favor. So that is why he sort of takes blame for it. PBKS and KKR were both trying to hit. Punjab was 77. Still, Shashank was hitting. Nowadays, players are scoring dots and boundaries, but they. So I agree, bhai. I agree that on bigger grounds, especially Lucknow, Ahmedabad, Mulanpur, on these new stadiums, you have a lot of pockets where you get a lot of singles and doubles. That ये चीज ऑस्ट्रेलिया ने की थी हमारे सामने वर्ल्ड कप फाइनल में, जहाँ पे बड़े ग्राउंड का उन्होंने सिंगल एंड डबल में कन्वर्जन बहुत ज्यादा किया था. Which I agree. Single and doubles are very very important in case if you're not scoring a boundary, क्योंकि अगर आप 3 सिंगल लेते हो तो 6 रन हो गए और आपको एक खराब बॉल मिली था, उसने चौका या छक्का मार के 10 या 11 रन की इस ओवर को कर सकते हो. आज चंडीगढ़ में फुल ऑन पार्टी होगा. यस, न्यू चंडीगढ़ में फुल पार्टी, चल तल्ली हो जाएगा. हाँ, श्योर. Why is Stoinis drop in today's match? No idea, man. They haven't really revealed it. Maybe an injury, uh, but that's all I can guess about Stoinis not being there. Is Rana lucky because it does not look like wicket taking deliveries more of, so he makes batsmen do that. तो कोई भी अच्छा बॉलर ना आपको हमेशा दो माइंड में रखता है कि आपको पता नहीं कि अब क्या करने वाला है. यू कांट रीड हिम. So you don't see Rana bowling a lot of Yorkers early on where you can scoop. You see suddenly Rana bowl a bouncer out of nowhere. You suddenly see a slower one that is out of your arc. You suddenly see a length delivery that is touching 140. So उसकी unpredictability जो होती है ना, उसकी वजह से बैट्समैन, जैसे आज उसने इसको आउट किया, प्रभ सिमरन सिंह को उसने पहला बॉल डाला, उसने मिस कर दिया, स्लोअर वन था शायद, एंड देन अगेन ही बोल्ड somewhere in the middle stump, knowing Prab Simran is trying to carve him down. And he tried to carve him down, but straight to point. Did not give that pace, but हर्षित राणा के पास एक हाइट फैक्टर है जिसकी वजह से बाउंस ज्यादा होता है, तो आपके बैट के ऊपर लगने के चांसेस ज्यादा है. Make sure to like and subscribe, guys. Yes, please. Parthi Patel, Parth Patel. What do you think of Zir? I think Xavier ने जो मिसफील्डिंग करके 5 रन दिए ना, वो मेरे लिए एक लर्निंग था, क्योंकि अगर वो बॉल डायरेक्टली उस तरफ चला जाता तो 7 रन आते. सो दिस इज समथिंग यू डोंट ऑफन सी a lot more that happens in cricket, जहाँ पे ऐसे 5 रन चला जाए, and it would have been really frustrating for Punjab to sort of give away those 5 runs, but they came back beautifully. I think full credit to Punjab on this. Okay. Can we say Chahal was not out of form? It's just the pitches were bad. I think for spinners, more what more important is that what is your role in the team, right? अगर आप इसकी बात करो सुयश की, सुयश शर्मा की, जो आरसीबी में खेलते हैं, his main job is to ball dot balls and not take wickets. However, Chahal, the kind of leg spinner that is, the kind of flight he gives, जितना वो स्लोनेस के साथ डालता है, जितनी वो दिमाग लगाता है, वो विकेट लेने के लिए ज्यादा सोचता है. Only and only when Chahal is under pressure, it is when he bowls fast ones. And Chahal mostly takes wickets through LBWs and bowls, if you observe. And for big hitters like Russell or someone who's really hitting it out of the park, like a Maxwell, he will bowl outside the off stump. जैसे रिंकू को किया उसने, उसके आर्क से दूर लेके जाता है कि आपको अगर मारना है तो आपको रीच करना पड़ेगा, hoping that it doesn't time well and gets caught in the deep. That is what Chahal's simple modus operandi normally is. What is your take on Shreyas Iyer captaincy? I think Shreyas Iyer as a captain is very very calm. बहुत लोगों ने श्रेयस अय्यर के बारे में एक चीज बोली है जो एक कॉमन फैक्टर है, इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ. उसको बहुत पता है कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे करने वाला है, उसका प्लान क्या है. वो दो माइंड्स में नहीं रहता है, उसके पास क्लियर गोल्स होता है. However, about Shreyas Iyer, one thing that I've noticed is when he's not getting wickets or when he's under pressure, he sometimes fails to have ideas that are more suitable to the game. So वहां पे उसकी थोड़ी सी रिस्क टेकिंग एबिलिटी में डाउट आ जाता है, बट इफ इज इन द गेम, if he's on the charge, he will not let a game go. KKR middle and lower order is overrated. Overrated because they performed better in the past. So they have been rated well. It's just that they're not able to strike where it does. So especially Venkatesh Iyer. Venkatesh Iyer was batting top order for KKR last year. They have shifted him with after Raghuvanshi coming in. And वेंकटेश अय्यर ने बोला है कि मैं कहीं भी किसी भी पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए रेडी हूं, बट आप एंट्री पॉइंट देखो वेंकटेश अय्यर का. वेंकटेश अय्यर हैज मोस्टली कम एट टाइम्स व्हेन दे हैव बीन अंडर प्रेशर and he's facing more spinners. However, against fast bowlers, he's a lot more lethal, gets more balls, and can play longer innings. And hence my problem with Venkatesh Iyer not batting at number 3 or 4. In fact, फिर वो राइट लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन का सीन है, तो फिर वहां भी वो फंस जाते हैं थोड़ा सा. Credit to Marco. Yes. Why Punjab not giving chance to Harpreet Brar? He can also bat.
I don't think Punjab wants to have a very lethal left arm spinner because they already have someone who spins the ball away like a Chahal. But I think in situations where they think that the pitch is very, very good and the scores are going to be more, I think I would like Harpreet Brar because he can really रोक सकता है सामने वाले को अपने लेफ्ट आर्म स्पिन से वो runs नहीं देगा आपको. I feel that. Why is RCB not making these ultimate playing 11? This is clearly not the best 11. Pandya, Liam need to be dropped. Both can't bat. Can you please make ultimate 11 for Chinnaswamy? Yeah, I have expressed this desire of having Swastik Chikara as in the Chinnaswamy overall, but in the Chinnaswamy specifically, it's a small ground. वो बहुत जोर से मारता है यार. आप यूपी T20 लीग अगर एक ऐप है उस पर जाके देखोगे, if you watch his hundreds, he has back to back hundreds. वो देखना, वो इतनी जोर से मारता है ना, उसका कभी इंस्टाग्राम भी देखना, इतना बड़ा बड़ा मसल है उसका, इतना बड़ा बड़ा. ठीक है, और वो थोड़ा सा लाइफ में भी फ्री है, मस्ती मजाक करता है. सो ही विल नॉट टेक हिज innings very, very seriously. He would be hungry to perform, but he would not be under pressure. And that's why I think Swastik Chikara is someone who can really rely on. Kunal is there for his bowling and fielding and experience, so I would not drop Kunal. Liam Livingstone, again, it's just about that one match. If Liam Livingstone on his day can really take it forward, he has taken it forward before also for RCB in this season. So I would give them a longer rope, not really tinker with the playing 11 because playing 11 बदलना हमेशा अच्छा नहीं होता है. Chahal versus Russell was a treat to watch. Chahal outfoxed him with the last delivery. 100% यार. लाइक वो एक दो यार रसल का पावर इतना है ना, रसल मसल का, कि वो छक्का चला गया, वो विकेट लेता ना बहुत मजा आता. लाइक वो प्लान था कि भाई सामने फील्डर है, तेरे को मैं आगे डालने वाला हूँ, तू मार के दिखा मेरे को छक्का. ये बढ़िया था. वेंकटेश अय्यर ने भी बोला था कि बॉलिंग कि मैं बॉलिंग भी डाल सकता हूँ, तो क्यों नहीं एक दो ओवर डाल रहा है. Venkatesh Iyer can bowl. Ramandeep Singh can bowl. Andre Russell can bowl. All of them can bowl. But I mean, when do you want them to bowl? Because Shreyas Iyer asked Suyash Shedgi also to bowl last time. He asked a few other Shashank Singh to bowl who would normally not bowl because the options नहीं थे. If KKR does really needs Iyer, then but हाँ एक मैं समझता हूँ कि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आ सकता है कि सनी रेज वेंकटेश अय्यर बॉलिंग वन ओवर, जहाँ पे प्रेशर में है एक ओवर निकाल दिया आपने, फिर आपके पास उतनी ओवर कम हो गई आगे डालने के लिए, विच इज ऑल्सो मेक्स सेंस बिकॉज सूरज शेट्टी इज एन ऑलराउंडर. अगर आप उसे एज अ प्योर बैट्समैन खिलाओगे पंजाब की तरफ से, देन आई थिंक it's just not right, especially when you want when you lack bowling options or your bowling options are going for a lot of runs. So that's that. ठीक है. Tomorrow's match is excellent. Delhi Capitals versus Rajasthan Royals. Delhi Capitals have to win at home. They lost to Mumbai again, choking the same way where the batting was Karuna was batting absolutely well. I wish they would have won, but nahi ho paya. Rajasthan Royals has a lot to think. Rajasthan Royals, the way they were beaten last time at home by RCB, have a lot to think, and especially in terms of their batting. Their batting has to fire. Dhruv Jorel has to come in form. Riyan Parag has to play longer innings. Jaiswal is back in form. He needs to continue it. Sanju Samson is batting very well. He needs to continue a little bit longer. Nitesh Rana probably needs to go a little up in the order, regardless of who gets out. It's not about righty and lefty anymore. And Arun Jaitley is not one of the biggest stadiums, so it'll be easy for them to clear it. So that's what my sort of thinking about Delhi Capitals versus Rajasthan Royals is. Delhi Capital has won most of the games, only lost one. So that's one. Mohit Sharma ne recently bola hai that the use of saliva is 100% helping the ball to reverse. So that's great news for our bowlers, especially in the death. Rana ne bola hai कि I'm okay to bat in any position but Rajasthan Royals. That is what professional cricket is. But I genuinely feel that uh, कि क्या ये राणा के लिए सही है कि नहीं एज अ क्रिकेटर. आई मीन ही वुड लव टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, आई गेट इट, बट फॉर समवन लाइक राणा नंबर 3 is a sweet spot to have him. Like you give him a long rope there and he'll really perform. Mohit Sharma is also happy with the fact he bat checks so right. Bowlers are very happy this IPL season. There are two balls, there is less dew, there is saliva that is allowed, bats are being checked if they're big or not. So I think there is some respite for bowlers this IPL, which creates matches like these. इसलिए अभी एक दो टाइम से मजा आ रहा है आईपीएल देखने में, एंड देन अगेन सडनली देयर इज अ हाई स्कोरिंग चेज एक्सेट्रा व्हिच सॉर्ट ऑफ गेट्स इट into an interesting concept. This thing. That's about it, yeah. Delhi Capitals के लिए I think Jake Fraser McGurk has to fire because it's been a really long rope, and if they want to qualify, and if they qualify, if Delhi Capitals qualifies, then probably JFM has to start batting better.
I don't know if Karun Nair plays tomorrow because if Faf du Plessis is still uncertain, then I would like Karun Nair to play again. And it would be really heartbreaking agar Faf du Plessis वापस आ गया and Karun Nair sort of has to sit about it. So yeah, I don't know if they are going to make those changes because I am not letting Karun Nair fall again. I would have anyone sit out, but not Karun Nair. No way I'm doing that. A little bit to think about Rajasthan in their bowling is Vanandu Hasaranga, Mahesh Tikishana, and are they ready to back players like Kumar Kartikeya? If they are ready to do that, then there is something, but that is something that Rajasthan Royals needs to really work on. Uh, can Padikal be replaced by Manoj Bhandage? I want Padikal to be replaced by Swastik Chikara. Uh, Manoj Bhandange, maybe because he's played a lot of the Maharaja Trophy also there. So probably yes, that could be an added advantage. Uh, in Chinnaswamy, at least you get an extra bowler. हाँ करेक्ट. अरे भैया साई किशोर कहाँ आ गया गया आज क्यों नहीं आया वो थक गया है भाई वो काम में फंसा हुआ है पूरा. Should TC use Natarajan instead of Mohit? No, I think Mohit Sharma is someone that has played a lot of matches, a lot of experience. CT के लिए भी help किया था. So in the middle overs and the use of Salai was helping reversing. So I would stick with Mohit Sharma. एक नंबर था आज का गेम. यस था. Your views on DC death bowling? I feel they will be exposed in the future. Ah, again, as I said, the saliva, Mitchell Stark, their ability to sort of choke runs is something that DC does well. I genuinely feel Akshar Patel needs to come to a little bit of a party with the bat and the ball. I think his captaincy's relied a lot on player forms and a lot of things, but I think he needs to really come and start bowling those overs where he chokes them. I know he once wanted to bowl in the power play that didn't work out against RCB, but yeah, Karuna will play tomorrow, 100%. I hope he does. Shears can be captain in limited overs. Yeah, for sure. मैंने ये आर्टिकल भी लिखा था हेड एंड शोल्डर्स अबाउट श्रेयस अय्यर लॉन्ग टाइम अगो जब इंडिया हारी थी ऑस्ट्रेलिया से तब. They can drop JFM. I think they can. Shreyas being captain in limited overs, 100% he can. Any more questions? Or we can end this. Iyer or Pant, I'd go with Iyer. I think Iyer is more level-headed. Um, he's very calm. Has worked a lot on the short ball. So I'll tell you about something about Shreyas Iyer. When Shreyas Iyer struggle कर रहे थे short ball के साथ तो बहुत मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया था कि भाई आपका शॉर्ट बॉल में प्रॉब्लम है क्या. एंड श्रेयस अय्यर गॉट वेरी अपसेट. At that point in time, उनके जो बचपन के कोच है प्रवीण आमरे, so when he was coming to Mumbai for the World Cup against the Sri Lanka game, प्रवीण आमरे उनसे मिले और उन्होंने बोला कि भाई तेरे को आता है शॉर्ट बॉल खेलना, बस माइनर टेक्निकल चेंजेस करने हैं, जो आकाश चोपड़ा ने बहुत अच्छे से समझाया है. आकाश चोपड़ा ने ये बोला है श्रेयस अय्यर के बारे में दैट नाउ cricket is a side on game, right? So now instead of the side on, he's opened his chest a little like this. So that means he's facing the ball here rather than facing the ball here. So that is why he's able to get that. Second, he goes a lot deep in the crease with weight not being only on the right leg. जब आप deep of the crease में जाते हो तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हो. Now he's equally distributing his weight on both the legs and hence he's comfortable either putting it on the ground or trying to loft it up. Okay, so and a little bit of mindset change, saying that I'm going to try and hit the short balls. I think that's something Shreyas Iyer, in fact, last Dulip Trophy ke time se Shreyas Iyer has tackled the short ball really, really well. How to tackle Varun and Narayan in the middle over? For Varun, you need to understand his variations and when does he want to have those variations. Okay, Varun is someone who has developed a lot as a bowler from being a side spin bowler to an overspin bowler to work on a very, very lethal googly that spins very fast. Okay, and Varun has also moved his lines a little bit towards middle and leg and not just focusing on putting it from outside. Hence, plus he bowls at rates and plus he bowls at lengths where you feel कि ball short है, लेकिन वो बॉल एक्चुअली इतनी जल्दी आपके पास आती है कि आपके पास इतना टाइम नहीं बैकफुट पर जाके मार सको. यू हैव टू प्ले इट स्ट्रेट एंड ऑल्सो वॉच आउट फॉर द स्पिन. So there are too many factors running around with Varun Chakrabarti, and hence it takes a lot of practice against those kind of bowlers to sort of understand where the release points are. Sunil Narayan again, यार, it's ये सब ना यार उसका हाथ से पढ़ना बहुत मुश्किल है. वो पीछे आता है एकदम से बॉल रिलीज करता है, उसकी लेंथ भी इतनी, वो आगे ही नहीं डालता है आपको, वो ना आगे डालता है ना पीछे डालता है. सो यू कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग विद वरुण
with this one. I think Surya Kumar Yadav plays Varun Chakravarti quite well. I think he sweeps him really well. Like how Surya Kumar Yadav does Rashid Khan or most spinners. He's tall, right? तो सूर्य कुमार यादव अपना बड़ा पैर निकाल के स्पिन से पहले ही आड़ा बैट मार देता है. One should be dropped from all formats. Does Punjab has the potential to win the IPL trophy? This season, everyone has the potential, except for a few teams. The last three, I think. I don't see DC, RCB, and PBK going together in playoffs. It looks good to be true. Man, there'll be a different IPL. This 2025 IPL will be remembered if these three teams go for the playoffs. Which team do you think has the ability of winning the IPL so far? You see, my pick is GT. I think Delhi, Gujarat Titans, Punjab, RCB. I think these four teams look really in a set of mind frame where they are winning. Their momentum is good. Their roles are clear, and their batsmen are. If the batsman is not in form, at least 2-3 people are in form. Because 11 के 11 फॉर्म में नहीं हो सकते. लेकिन आपके दो तीन प्लेयर फॉर्म में है in bowlers and batsmen, then you can have a good chance of winning the IPL. Thanks for the live. Can you explain top spin over sin? So top spin ऐसा कैसा समझा, बॉल नहीं है मेरे पास. तो मान लो ऐसा बॉल है, ठीक है, और ये एक्सिस है, ठीक है, ये ऐसा एक्सिस होता है ना, ऐसा एक्सिस होता है, कैसा ऐसा एक्सिस होता है. तो बॉल का सीम कैसा घूमता है ना, उसके ऊपर साइड स्पिन होता है. तो बॉल का सीम अगर साइड में घूम रहा है ऐसे ऐसे है, मतलब अगर ये बॉल का सीम है और बॉल का सीम ऐसे ऐसे घूम रहा है साइड स्पिन ऐसे करके, तो वो साइड स्पिन होता है. टॉप स्पिन में बॉल ऐसे घूमता है ऐसे, और वो आपको लगता है कि आपकी तरफ आ रही है, लेकिन वो बॉल हल्की हल्की पिच करने के बाद आपसे थोड़ा दूर जाने लगती है ऐसे करके. जैसे बास्केटबॉल में होता है ना, बॉल ऐसे ऐसे घूमती है तो आपको लगता है आपके पास आ रही, बट इट कम्स बैक टू यू. सो दैट इज व्हाट टॉप स्पिन इज. एंड देयर इज साइड स्पिन विच बॉल रोटेट्स लाइक दिस, साइड में स्पिन होता है. मैग्नस इफेक्ट करके है, मैग्नस इफेक्ट पढ़ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग है. थोड़ा सा फिजिक्स है उसमें, वो थोड़ा सा मतलब ऐसा आसान भाषा में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे को भी बहुत टाइम लगा था. मतलब अभी भी मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया उसको, लेकिन वो है ऐसा. उसका कुछ टॉर्क वॉर्क रहता है, उसका फिजिक्स बहुत है, इतना पढ़ाई नहीं किया मैं लाइफ में. बट हाँ, उसको टॉर्क रहता है, जिससे बॉल जिस रोटेशन में जाता है, सीम जिस रोटेशन में जाती है, एंड with that is when the seam is rotating, if it falls on the leather then it is a different trajectory, if it falls on the seam then it's a different trajectory. But a lot of spinners also depend a lot on drift. तो जैसे हम हवा में बॉल को छोड़ते हैं ना, तो बॉल हवा में ड्रिफ्ट होती है, जैसे अंदर आती है बाहर जाती है. वो ड्रिफ्ट के ऊपर बहुत खेल होता है. अगर आप किसी अच्छे स्पिनर को सामने बैटिंग कर रहे हो ना, कभी देखना बॉल आपको लग रहा है कि आपके पास आ रही हवा में, बट टप्पा करके बाहर चली जाती है, जो अश्विन बहुत अच्छा करते थे. वैसा फ्रिस्बी की तरह बॉल लाता था, खट करके ऐसे ऐसे जाता था. तो साइड स्पिन और वो टॉप स्पिन ऐसा अलग अलग रहता है. ऐसा मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, अभी मेरे को कोट मत कर देना कि अरे ऐसा नहीं, उसमें बहुत ज्यादा है फिर आगे. डिस्कशन ऑन ओवरव्यू ऑफ एवरी आईपीएल एंड सो फार सून, विल डू दैट सून. कार्तिक सिंह, ये भाई भाई मेरा गलती नहीं है. मैं कल भी सीएसए का तुमको इंटेंट परसेंटेज बताया ना, केकेआर का मैच में 12% इंटेंट था बाउंड्री स्कोरिंग का. तुम्हारा ओवरऑल इंटेंट 38% है बाउंड्री स्कोरिंग का, जबकि बाकी टीम 70-80 पे जा रहा है. तुम्हारा ओवरऑल स्ट्राइक रेट 124 है, जबकि बाकी का टीम का 170 है. तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस स्टैट बता रहा हूँ, बाकी देख लो आप. GT, Punjab, DC, and MI due to experience. Lucknow, I think, can be off teams. Correct. Best game. Yes, best game. Chalo ji. If you don't have any more questions, thank you very much for joining me in this podcast. I was alone, but I was with you. What are your opinion on Josh D92 performance? Josh D92 कौन? Josh Butler? पता नहीं. Anyways, thank you very much for joining me in this podcast. I was alone, but your comments keep us all of us alive. Please like, share, subscribe. Also follow us on Instagram, like our reels, share them, and if there is any feedback, let us know in the comment section.